मैंने बोला था ना भगा देंगे, भगाना चाहिए भाई, घर में रख के क्या करोगे? ऐसा लगता है तुमको? सारे बच्चों को लगता है कि मेरे घर में मुझे पूछा नहीं जाता, ठीक है? सॉरी, बाहर जाने के बाद यस यस यस, अब देखो ना, हाँ एग्जैक्टली सी, वो भी तो अपना काम करेंगे कि हर वक्त तुम्हें फोन करके पूछेंगे अच्छा बेटा कैसे हो। पहले जब नए नए थे, जब बाहर गए थे, राइट, अब उनको पता चल गया कि इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स पता चल गया है बाहर का, दे आर मतलब कंफर्टेबल है, तो चलो मैं भी अपना काम सही से कर लेता हूँ। राइट, चलो बात करते हैं हम थोड़ा सा कुछ। क्या हाँ, अभी पढ़ेंगे कैपिटल पनिशमेंट का, राइट टू डाई विद डिग्निटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अभी तो तुमने शुरू किया है, पूरे 1 महीना चलेगा ये पूरी कहानी। हाँ बोल, कितने 15 दिन तो हो गया हमारा, 15 दिन और चलेगा या सॉरी या नोटिफाइड बाय, कल मैं जयशंकर के साथ, एस जयशंकर आए थे एक्सप्रेस अड्डा पे, मैं लिसनर था, ऑडियंस था। यस, मेरिडियन होटल से he presented, he was at Indian Express अड्डा, तो हम लोग थे वहां पर, आई वाज देयर। तो वो कल बता रहे थे कि यस नोटिस सीए हैज बीन नोटिफाइड, तो मैंने रूल बताया ना कि कोई भी एक्ट आता है तो उसका एक रूल भी आएगा। अच्छा, रूल में क्या होता है? द एंटायर प्रोसीजर्स, है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, लॉ इज डिफरेंट, प्रोसीजर्स आर डिफरेंट। जो आर्टिकल 21 में है ना, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो लॉ अलग है एंड प्रोसीजर्स अलग है। द लॉ इज एक्ट एंड प्रोसीजर्स आर डिफाइंड बाय द रूल्स। That citizenship amendment rules had been notified yesterday now, and then it is now it will be finally implemented. Sorry, रूल्स आते हैं तभी वो एप्लीकेबल होता है, वो अलग, वो अब हम उस कहानी में जाएंगे नहीं, केरला ने क्या किया, राइट। The right to food we do yesterday as natural right. हाँ, right to food is a natural right. कोई खाना ना दे, बोलो यार मेरा नेचुरल राइट है खाना, तभी तो कुछ लंगर होता है, हम लग जाते हैं, और कोई मना नहीं करता है, राइट। खाना, see this is very old and natural conception. If someone is hungry, give food, होता है ना। कोई if someone is thirsty, give water. हम लोग पानी भी रख देते छत पे कि कबूतर पी लेगा करके, right? Why is it so? Because it is a natural right of every person to access good, food and water, है ना? ठीक है ऋतिक, right to food is, but sir, right to food is a legal right. See, it is not that natural right has not become a legal right. The many natural right has become a legal right. Right to marry, you can say that it is a natural right, but it has become a legal right. Right? Anyway, it is also fundamental right. ठीक है, CS ऋतिक, so we can consider both. Rights overlap. अब मैंने तुम्हें अरेस्ट का अपने लिबर्टी के बारे में मैंने सारा बता दिया, आपके लिए आपके पास क्या लिबर्टी है, हाउ स्टेट कैन परफॉर्म बेस्ट टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी, एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। अच्छा, आपने कुछ लिखा, वो मैंने कुछ बोला था लिख के लाने के लिए आपको।
बोला था पढ़ने को लिखने को भी बोला था, सारा चीज मैं काम करूंगा तो कैसे चलेगा, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोला था, राइट। अब नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन, कंसीडर, अच्छा फर्स्ट लेट मी जस्ट कंक्लूड दिस, you have not written Kharak Singh case versus state of Uttar Pradesh, Satwan Singh versus passport office case, and Menka Gandhi versus Union of India case. These 4 cases you should note down by your own, ठीक है। ये आप खुद देखो, जो कुछ खुद कर सकते हो ना, आप छोटा बच्चा तो नहीं हो, राइट, जो बोलूंगा वो करना है। और प्लूटस में तो ऐसे 1 by 1 जाओगे, जब विजन में इतना ज्यादा तो टीचर पहचानते नहीं किसी को, क्या करो, हाँ जो बोल दिया वो बोल दिया, राइट। एनीवे यहाँ पर है कि हमारा क्लास छोटा होता है, तो वी कैन ऑब्जर्व एवरी पर्सन, एवरीवन इज अटेंडिंग द क्लास, whether they are appearing in the test or not, right? If they have some issue, yeah, we can solve that issue. Yes, दोबारा दे देना, अच्छी, it is an opportunity for you to attempt it again. It is an opportunity, right? Now I'll ask one question. Consider हम लोगों को बाहर से लॉक कर दे प्लूटस, बोले कि जाना मना है, हो सकता है ना, और ये घर पे जाए और इसको ताला लगा दे फैमिली वाले, तू जाएगी नहीं यहां से, मैं जाऊंगी नहीं, अरे तुम्हें जाने नहीं देंगे। Have you seen women have been arrested by their own family members in some cases? Whatever. Have you seen that kind of? बंद कर दिया ना? Okay. So that is, negation of freedom. It is a negation. Negation मतलब opposite of freedom. Negation of freedom. Your freedom is denied. This is one case. Consider tomorrow you go to, you just walking on the road, police arrest you, right? और arrest करके कोर्ट में नहीं ले गया, वो कहीं पर झज्जर में लेके चला गया, very root area where no one is located, वहां पर रख दिया आपको. That is again negation of liberty. Again negation of liberty. This can be happen, na? This can be happen to you, right? Let me tell you, just aware about your rights. You know the law, know the rights. Right? There is a paper in Delhi University, your law and your rights. You should know what are the laws, right? In order to protect yourself. है ना? तो पता चले रोते वहीं पर आधी से 1/4 हो गए. Now, my question is, what will you do then? What will you do then? Or consider your family member is arrested illegally. That is a negation of liberty. One is taken as a confinement. Consider money को किसी ने confine कर लिया. Now, what will you do? What he will do or what his family will do? क्या कोर्ट में क्या करने जाएंगे? नहीं, मान लो उनके घर वाले को पता चल गया कि मेरा बच्चा मिसिंग है. Exactly. So you have to file a writ petition, and that is habeas corpus. You have to file a writ petition, and that is habeas corpus, right? And the court will listen habeas corpus, and then will notify any person or any organization to free the person, right? Or present the person before me, before the court. Got the idea? आपके फैमिली मेंबर करेंगे और कौन करेंगे? तो आपके दोस्त करेंगे, पता चल जाता है. Mostly women are confined when they are in affairs. देखो हम शादी नहीं करने देंगे, होता है ना. See, look at the practical life. मेरे घर में शादी करवा दिया, आसान नहीं है. बोल के देखना कि लड़का ना साउथ का है, नहीं चलता. सी द लिबर्टी, वो बोला नहीं चलेगा, इसको पता है कि लिबर्टी नहीं है इसकी. शी नोज की लिबर्टी नहीं है.
right? She knows her limitations. I'm teaching you the liberty. Liberty means you live your life as you wish, but don't take liberty as a license. Sir ne sikhaya hai. I'm teaching you liberty. Liberty means action with some sense of region, right? Some sense of rationality, right? I'm not teaching you liberty की 100 पे स्पीड पे गाड़ी चलाओ, ठीक है? ठीक है? जो मन करे तो भांग तो नीचे भांग खा लो. That is one can say ना, this is my liberty, मैं भांग खा लूं. कोई नीचे you can lie down, कोई उठा के ले जाने वाला नहीं होगा, right? So Holi is coming, prohibit this. अरे लग बच्चे लोग करते भाई, करते. अच्छा, तुम्हारा इनाम पहले आएगा. राइट, डोंट से कि कौन करता है सर. सर अनजान नहीं है, सर जानते इस एज को. हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं इस एज में. पीते थे एक आध बार पिया था, राइट? 2-3 दिन तक लगी रहती है. सो अवॉइड इट, राइट? अच्छा, सो अच्छा, ये तीनों जजमेंट यू हैव टू राइट. कौन कौन सा? एके गोपालन, खड़क सिंह, सतवंत एंड मेनका गांधी. These 4 judgment you should note down, and you must mention when the question is on liberty, right? When A.K. Gopalan, when the Supreme Court actually defined very narrow definition of liberty, then Kharak Singh, then Satwan Singh, and then Menka Gandhi case. ये चारों को आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है? Now, if someone's liberty is actually confined, then one can approach to the court with what? With habeas corpus, to claim, in habeas corpus. ठीक है? तो एक लाइन ये लिख लो. ये जजमेंट लिखने के बाद, right? All 3-4 judgment you mention in your notes, and then you note. तो उतना जगह छोड़ देना, ठीक है? फेयर अलग करते हो तो बात अलग है. नहीं, एक पेज है, ज्यादा बहुत है ज्यादा. देखिए, one can file writs of habeas corpus. One can file writs of habeas corpus when someone's liberty is curbed illegally. CURBD, curbed illegally. One can file writ petition of habeas corpus if someone's liberty is confined. ये लिखा है ना, यही वर्ड लिखा है ना, curbed. ओके, ठीक है, अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, मतलब वही है. If someone's liberty is curbed illegally, right? किसी ने दृश्यम मूवी देखी है? दृश्यम मूवी इज ऑल अबाउट habeas corpus, ठीक है? समझ में आया? Now, let me talk about the third term, that is pressure established by law. अच्छा, इस बार पीटी कब है? तो कुछ बता दूं मैं कितने सवाल आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे? चेक करें, गेम खेलते हैं, हर बैच में मैं खेलता हूं, राइट? कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, राइट? नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा? आई कांट से क्वेश्चन क्या होगा, बट आई कैन से आई एम इन पोजीशन टू टेल यू क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, राइट? और किन चैप्टर से होगा, राइट? एंड देन यू चेक आफ्टर द एग्जामिनेशन कि आता है कि नहीं आता. आई कांट इंश्योर कि 100% ऐसा ही होगा, बट यस 70% ऐसा ही होगा जैसा हम प्रेडिक्शन करते हैं. प्रेडिक्शन इज ऑल अबाउट doing something on the basis of your observation, your experience, है ना?
राइट। सो करें, कुछ करें, चलो बताता हूं। हाँ, पॉलिटी का मैं और दूसरा को जिम्मेदारी नहीं लेता, सब अपना अपना जिम्मेदारी संभाल ले, बहुत है। इफ आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज इनफ, ऑनेस्टली, ठीक है। अब हर जो भी पढ़ाते, जो भी या जो भी जो पढ़ते हैं, डू योर ओन वर्क ऑनेस्टली। दुनिया क्या करती है, लिव इट दुनिया के लिए, राइट। सो लुक एट 2000, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन वुड बी 18 to 20, राइट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट किस चैप्टर से होगा। वन इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक सवाल होगा यहां से, राइट। दूसरा सवाल होगा प्रियम्बल और बेसिक कॉन्सेप्ट से। प्रियम्बल से आता नहीं है क्योंकि बहुत आसान है, एसएससी टाइप। बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसका है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, पढ़ाया है ना, राइट। डेमोक्रेसी, उससे एक क्वेश्चन एक होगा, राइट। नाउ कम टू द फंडामेंटल राइट, एफआर, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन होंगे दिस चैप्टर, right? You'll be able to solve it, don't worry, right? Now fourth chapter, directly we go to the parliament, या पार्लियामेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट जाते हैं। there will be 3 to 4 question from parliament, right? 2 3 4 3 7 हो गए। Fifth is जुडिशरी, एक सवाल। लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में जब मैं पार्लियामेंट कह रहा हूं, अगर हम स्टेट असेंबली भी जोड़ दें इसको, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी ऑन डिफैक्शन, लेट डेफिनेटली क्वेश्चन विल बी ऑन डिफैक्शन, राइट। भाई पता है, आपको भी पता चल जाएगा 1-2 साल बाद, बाबा जब बन जाओगे तो पता रहेगा। बाबा का मतलब क्या होता है, a little have experience, you have little experience, then you are all freshers, right? now अगर हम स्टेट असेंबली जोड़ लें, राइट, तो यहां पे हम 4 से 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं। हाँ, जुडिशरी से एक, लोकल गवर्नमेंट से एक, right? Now there's a RPA Act, Representation of People Act, 1951 से आता है एक्चुअली, 1951, right? Including electoral reform, right? Including electoral reform, election commission, ये पूरे से हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आए, ज्यादा नहीं, राइट। कितना हो गया टोटल, जोड़ो तो 12 हुआ है, 13 हुआ है। Now question will be on ऐसे लिख दिया। Look at maybe the executive, there may be question 1 on executive, और जितने होंगे और मिसलेनियस होंगे, कहीं से भी हो सकता है, रैंडमली कहीं से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट ये स्टैटिक पार्ट से आपके सवाल होंगे,
राइट, करंट अफेयर से कुछ हो सकता है, कुछ डायनेमिक, कुछ ऐसा अटपटा पूछ देगा, एनीथिंग दैट, राइट, बट दिस कैन बी द मे बी अमेंडमेंट से एक होगा, अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एक होगा, एंड द रेस्ट विल बी द मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देख लेना। हाँ ले लो फोटो, तभी तो साक्षी रहेगा। नॉट 100%, आई कांट जस्ट से कि यही जाके पढ़ के जाओ और एग्जाम दे दो, आई नेवर से टू एनीवन, राइट, but yes, this is the something you can have control on it. These chapters you should revise again and again when you, पर अभी तो आप लोग नहीं जा रहे हो ना, आपके टाइम पे बदल सकता है, आपके टाइम पे हो सकता है इसमें नंबर बढ़ जाए या घट जाए, इसमें नंबर बढ़ जाए घट जाए, डिपेंड्स ऑन इस साल क्या पूछा है, राइट। अब देखते हैं क्या आता है सवाल, राइट। एनीवे, now let me start article 21 again. Now look at here, we need to talk about procedure established by law. Now if you look at article 21, it says that no one shall be deprived of life, right to life and personal liberty except the procedure established by law. Now what is the meaning of the procedure established by law? First you think that this has taken from which country? जापान। ये दिमाग में रखना, ये जापानी ओरिजिन है, तो राइट टू इक्वालिटी से इसका कोई मन लेना देना नहीं है। हो सकता है राइट टू इक्वालिटी रेफर्स टू, उसमें बहुत सारे रूल ऑफ लॉ, ये लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, सबने प्रोसीजर एस्टैब्लिश भी लॉ को लिख भी कर दिया। हमारे से यूएस, हमारा यूएस नहीं, मेनी कंट्री यूजेस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, राइट। इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट जुडिशरी इन द वर्ल्ड, लेट मी टेल यू, ऐसा होता है। हाँ हाँ, यस यस, इंडियन जुडिशरी ऑल्सो रेफर सम जजमेंट ऑफ द यूएस जुडिशरी, होता है, होता है। सी we are looking for the best practices basically around the globe. Now अच्छा, ये कहां से लिया गया? जापान से। Now what do you mean by procedure established by the law? इसका मतलब क्या होता है? Law, yes yes, procedure established by law actually defined in one, so ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, basically Supreme Court has defined in A.K. Gopalan case, right? And what was the Supreme Court definition? If you look at, in A.K. Gopalan 1951 case, the Supreme Court has defined procedure established by law. In A.K. Gopalan case, Supreme Court has defined, Constitution define नहीं करता है, right? Sometime objective में आ जाएगा Constitution define it or Constitution does not define it. So you know what Constitution defines, what Constitution does not define, right? So Constitution does not define it, Supreme Court has defined it, right? Defined procedure established by law, right? It denotes law passed by the parliament and state legislature. Law passed by the parliament and state legislature, along with
along with procedures explained by the state. जैसे लॉ क्या है? CAA is a law, right? Constitutional amendment, नहीं, Citizenship Amendment Act is a law. Recently, government has explained the rules. Citizenship Amendment rules. Rules कहते हैं उसको. Citizenship Amendment rules 2024 defines procedures, right? So law and procedures both are, ऐसा नहीं कि law कुछ और होगा, procedures कुछ और होगा, नहीं. The procedures shall be defined, explained in details, right, according to the law, because law are basically precisely articulated in a act. है, बोलिए. Every law has their rules. Without rules you can't implement, right? जब प्रोसेस ही नहीं होगा तो लॉ का क्या, आप अरेस्ट करके क्या करोगे या कुछ करके क्या करोगे, राइट? अब ये प्रोसेस है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स में होगा कौन कब आएगा, कितने दिन के बाद आएगा, फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, क्या क्राइटेरिया होगी, किसके लिए होगा, एज क्या होगा, सब कुछ डिटेल्स में होता है, राइट? So basically every law has its own procedures. That is called procedure established by the law. Now if you look at in the procedure established by law, in procedure established by law, a state has upper hand. No, a state is very powerful. Now judiciary cannot intervene into it. Why? Now you see the A.K. Gopalan case, judgment, yesterday we discussed. A.K. Gopalan case, so court can protect you from arbitrary action of the state, but cannot, the law can be discretionary or arbitrary. But if you look at the Menga Gandhi case, where Supreme Court actually checked the Supreme Court, the state, that law, even the law should be just, fair and reasonable, right? Now अब आ जाते हैं हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझने के लिए. अच्छा, ये समझ में आया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? कोई दिक्कत है? मनी, डिड यू गेट द आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? अब तो कोई टीचर पूछेगा, अच्छा प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? यू स्पीक व्हेनेवर यू गेट चांस, जब भी मौका मिले बोलो, राइट? रेज योर हैंड कि सर मैं जानता हूं, ठीक है? Wherever you go, you take permission, ठीक है? ये भी परमिशन लेना होता है, ये भी एक तरीका होता है, that is a decorum. ऐसा नहीं कि एक साथ सबने बोलना शुरू कर दिया, I can't hear, ऐसे ही क्लास में होता है ना? No, you have to take permission, you have to learn, right? मान लो if you are sitting in debate, if you want to speak something, बीच में शुरू कर दिया टीवी डिबेट की तरह, फलाना जी आप रुकिए, आप क्या जानते हैं, नहीं, you have to raise the hand, right? You raise hand, वो सामने वालों को पता है कि इसको कुछ बोलना है. और जो मॉडरेटर का काम क्या होता है, जैसे इन क्लास रूम टीचर इज योर मॉडरेटर, राइट? तो मॉडरेटर का काम होता है कि whenever opportunity comes, it should give the opportunity to the person who raised the hand to express themselves. But the idea, that is called decorum. ऐसा नहीं कि बीच में ही घुस गए, रुको 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 मैं बोलता हूं. That happens in TV debate. Look at the TV debate. दंगल, अच्छा वो किस आज तक चिल्लम चिल्ली कर देना, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. हाँ, if you engage in politics, party politics, if you join party, right, and if every party does the same, आपको भी करना पड़ेगा, नहीं? But better you maintain certain decorum, isn't it? Decorum is always good. नहीं, मान लो कि there is a metro, better make a queue, let the first come out the passenger and then you enter.
हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते होता है ना. Now that we are not actually, this is and then उसके बाद हम झंडा फहरा लेते, nationalism. Go to Japan, look at how Japanese nationalism is all about. Japanese nationalism is all about the discipline, decorum. Look at Germany, go to the Germany. रेड लाइट होगा वो क्रॉस ही नहीं करेगा. जब ग्रीन होगा वो जो कार वाला है बिल्कुल वो वहीं पे रुकेगा, बहुत दूर आगे. यहाँ पे देखते हो, पो 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 बिल्कुल कार घुसा देते हैं. यू सी, हाँ बिल्कुल बोनट आगे कर देते हैं कि चलो उसके बाद तो मुझे जगह मिल ही जाएगी, राइट. और हम भी करते हैं, रुको रुको कार वाले को, रुको रुको, लेट मी क्रॉस फर्स्ट. दैट वी डू, right, and that leads to anarchy. If the sufficient number of the volume it will occur, it will create anarchy, right. So have some decorum, have certain discipline, have certain responsibility, have certain rationality, how to speak, how to behave, how to walk, everything is arranged. Otherwise, love to fall in anarchy, then it's up to you, है ना, ठीक है ना. चलो, got the idea. Chalo, let me talk about the due process of law. Now, if you see the due process of law, we have, अच्छा कहाँ से borrow किया हमने due process of law को? US, yeah? It has borrowed from US. It has a US origin, right? Now, in the due process of law का मतलब होता है fairness. क्या मतलब होता है? Fairness, right? Now, in due process of law, what happens? Law cannot be arbitrary, right, or discretionary. Law has to be fair, just, and reasonable, right? Law has to be fair, just, and reasonable. लिखिए, आपके नोट्स में है ही नहीं, है क्या? है, लिखिए. Due process of law implies fairness. It refers that law has to be just, fair, and reasonable. Law has to be just, fair, and reasonable. Now, who makes the law? In every country, legislature, right? Who makes the law? It is a legislature, right? But consider the legislature have made certain law, but which is not an unjust law, which is not a reasonable law. Now, who is responsible to check on it? The judiciary, right? Now, if you look at parliament makes law, some discretionary law, then judiciary can check it, right? Got the idea? So look at here, judiciary has upper hand. Judiciary has upper hand, right? If the parliament or the state legislature makes certain law, right? In that case, judiciary can say that this law is not valid. This law is not valid because this law is not a fair law, not a just law, not a reasonable law. बाद में ऑफ कोर्स बाद में सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं करेगी, चैलेंज होगा तभी करेगी ना. सुप्रीम कोर्ट सो मोटो भी लेती है. इट्स नॉट दैट सो मोटो एक्शन इज नॉट टेकन अप बाय द जुडिशरी, इट इज टेकन अप बाय, राइट. फॉर एग्जांपल फार्म्स लॉ बना था, फार्म्स लॉ, बहुत प्रोटेस्ट हुए थे. जुडिशरी हैज टेकन सो मोटो एक्शन एंड इट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी टू रिव्यू द लॉ. दैट इज कॉल्ड जुडिशियल, जुडिशियल एक्टिविटीज ऊपर. It is called ultra activism of judiciary, judicial overreach, right?
और जुडिशियरी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जुडिशियल ओवर आर्किंग भी बोलते हैं इसको, राइट। और एक और वर्ड है मुझे दिमाग, अल्ट्रा, एक और वर्ड है, एनी दैट इफ यू रिमेंबर दैट वर्ड आ रहा है आपके दिमाग में तो आप बता सकते हैं, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एज ऑफ नाउ। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल, एक और वर्ड है दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं 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 आएगा, कोई बात नहीं। बट जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल ओवररीच, राइट। मान लीजिए कोविड था, ड्यूरिंग कोविड इफ यू सी दैट स्टेट वाज वेरी एक्टिव, right, medical sector was active, police was active, everything was active, even then judiciary was actually issuing guideline, right, that is called judicial overreach, not activism, it's ultra activism। कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म तो तब होता है कि when the other two branch are silent and there is a need to be, right, act, right, state नहीं, जुडिशियल रिस्ट्रेंट मतलब होता है जुडिशियरी जब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिस्ट्रेंट। बिल्कुल, काउंट कब करते हैं, जब पढ़ाऊंगा तब। जुडिशियरी जब दो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही होती है उसके बावजूद जुडिशियरी उसको गाइडलाइन करती है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। इलेक्शन कमीशन वाज अ जुडिशियल एक्टिविज्म कि सरकार लॉ पास ही नहीं कर रही थी, इट वाज इन एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी हैज गिवन अ गाइडलाइन कि भाई करो, तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है और तुम अपने आप कर दे रहे हो। आशा, आई एम टॉकिंग इन हिंदी, आर यू गेटिंग इट? Right, whenever judiciary issue a guideline to the government on which government is very much silent, very much sitting. Let me tell you about the Visakha guideline. I hope Visakha guideline you are aware of, right? Now there was no law to protect the women from sexual harassment at workplace. Now who's the responsible to make law? The parliament, the legislature, but there was no law, right? The government was, the legislature was not actually concerned about the sexual harassment of women at workplace. Now in absence of state inaction, right, the judiciary has played a proactive role कि भैया ये काम, जब आप पढ़ते नहीं हो ना, घर पे नहीं पढ़ते हो तो माँ बाप बोलते ना पढ़ो पढ़ो, that is called judicial activism। when other two branch of the government does not work, then judiciary कान पकड़ कहता है ये काम करो, that is called judicial activism। जब पढ़ रहे हो उसके बाद भी बोलो पढ़ो, उसके बाद क्या पढ़ो भाई, हम तो रीडिंग इट, इट हैपेंस। जब आप खाना खा रहे हो, पढ़ने पे तो नहीं, पेरेंट्स डज नॉट डिस्टर्ब, खाने पे डिस्टर्ब करते, और खाओ, और कितना खाओ, हाउ मच यू वन कैन ईट, राइट, वन कैन फिल स्टमक, right, one cannot fill their pocket also with food, right? So that is called judicial overreach when the other two branch are already working on that, right? Some issues like COVID-19 or the farms law, government was already ready in negotiation with the farmers, judiciary ने अपना summit committee बिठा लिया। judiciary का ये काम नहीं है, all three branch of the government have the different work altogether। the legislature has a different work, the executive has different work, and the judiciary has different work, right? And the organs of the government should work according to their assigned duty, है ना? No one can go in the zone of the other, right? But consider if some organ or some part of the government is not doing that, then judiciary issue the guideline, ये काम करो। समझ में आया? अल्ट्रा एक्टिविज्म समझ में आया कि जब जरूरत ना हो तभी भी कहना, बट आइडिया। तो अभी वो बाद में बात करेंगे, राइट? अब जब वर्ड, अच्छा, सो व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस द लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड reasonable, right? You should write, लिखिए, the legislature is responsible to frame a law, to frame a law,
and explain its process, its processes. The legislature is responsible to frame a law and explain its processes. If the law and its processes are discretionary, or arbitrary, then the Supreme Court has authority. Then the Supreme Court has authority to check whether law is just, fair and reasonable or not. Then the Supreme Court has authority to check whether law is just, fair and reasonable or not. The law and processes are discretionary or arbitrary, then the Supreme Court has authority to check whether law is just, fair and reasonable or not. अच्छा, अब ये कहां चलता है? ये यूएस में होता है. Now if you look at in India, we follow the procedure established by law theoretically, not process. If you look at, we theoretically follow this procedure established by law, but after the Menka Gandhi case, in practice we follow process of law. But let me tell you, not all the time. Sometimes what happens? The state validated, the judiciary validates even the discretionary law. And the example is PMLA. This is very dangerous law, let me tell you. Very dangerous law. Right? Very dangerous law. अब मैं आपको article 22 बताऊंगा. We'll move into the article 22. If arrested person have certain rights, if you are arrested by a police, you have certain rights. But you know, here you don't have rights, any rights. Consider if person is arrested, that person should be present before the judicial magistrate within 24 hours. Now here, if you look at, if you are arrested under this law, ED will not produce before the judiciary. Right? Secondly, if you look in another case, what happens? The prosecution part proves that you are a criminal or you have actually violated the law. But here you have to, the arrested person has to prove that he is innocent. Right? In simple law, what happens? You know, in simple law, what happens? The arrested person is not guilty until the the prosecution part proves the the proof. जब तक वो prove नहीं कर दे कि he is convicted, he is really the person perpetrator of the crime, he is free. He is free, not guilty. But यहाँ पर क्या है कि person is guilty until he proves himself as he is a innocent. Am I making sense? Poxo का context अलग है, यहाँ का context अलग है. Poxo is to protect child from sexual harassment. Look at each third child is sexually harassed. I'm not saying my data, this is government data. Each third child, and 90% children are sexually harassed by their family members. Chacha, Tao, Mama, Mausa.
In some cases, even the father. Let me tell you. In some cases, the father. Right? So mother is the appropriate authority, right, to explain everything, not to the father. Anyway, so in practice we follow the due process of law. But generally, for example, in 2015, Supreme Court invalidated the National Judicial Appointment Act, NJCE Act. Right? It invalidated another act. Now look at the Citizenship Amendment Act. Now Citizenship Amendment Act is a discretionary, on the basis of religion. But हो सकता है कि judiciary पे सुनवाई ना करे, because context is totally different. But if you talk about PML Act is very dangerous. We'll talk about it little later. ठीक है? Yeah, clear due process of law? Clear? Right? लिखिए, since Menka Gandhi case, judiciary has put a check on. Since Menka Gandhi case कब आता है? 1978. P.N. Bhagwati was the Chief Justice. Since Menka Gandhi case, Supreme Court has put check on legislature. Supreme Court has put on, Supreme Court has put check on legislature. Right? The law has to be fair. The law has to be fair. Got the idea? समझ में आया? अब हो गया आर्टिकल 21 खत्म. और भी है आर्टिकल. अच्छा हाँ और है डिबेट. अच्छा yes you're right. Now look at the recent debate on Article 21. There yes मैं भूल ही गया कि चलो I was taking shortcut. Right? Oh मैं भूल गया actually. Yeah. Like the recent debate on Article 21. What are the recent debates? Now the first debate मैंने mention किया है right to education, I think. हाँ तो 21 is a separate, but is a very much integral part of 21. Right? So let's discuss about article. This one क्या बोलते हैं इसको? Right to education. Right to. Now if you see before 2002, right to education was not a fundamental right. Right? It was not a fundamental right. It was placed in Article 45. है ना? 45 में था DPSP में. अब हुआ क्या? Now there was a demand. Look at, there was a demand. So right to education should be included in the fundamental right. Education should be a fundamental right of each children. Right? And the state should focus on it. Now in this debate, what happened? There was a Supreme Court judge intervention. There was a Supreme Court intervention. Now, if you see J.P. Unikrishnan है ना? Yeah, J.P. Unikrishnan. कुछ लिखना नहीं, समझो और फिर खुद से लिख लेना. सब लिखा हुआ है. In this judgment, if you look at Supreme Court held that, that right to education is a fundamental right under Article 21. In this judgment, Supreme Court ने क्या कहा? Right to education is an integral part of right to life. Without education, right is not a dignified life, a developed life, a good life. Right? And therefore, if you look at,
government actually, the government amended the constitution, and finally you have कौन सा 86 ना, 86 CAA Constitutional Amendment Act कब हुआ ये? 2002. Yeah, look at 86 Constitutional Amendment Act, and where what happened in 86 Constitutional Amendment Act? क्या क्या हुआ? एक तो हुआ कि insertion of Article 21A, a very separate article for the right to education. एक क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव बिडले से सही होते हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं पूरा क्लियरली, बट जब टेस्ट होगा आपका किसी एक आध का सही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया जाता है कि आपको ट्रैप कर ले. यूपीएससी क्या होता है, यू नो थिंग्स, थोड़ा सा लैंग्वेज ही पकड़ नहीं पाए आप एग्जामिनेशन हॉल में, एंड यू मेक द रॉन्ग थिंग. happens, right? When you go out to the classroom after the examination hall, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो it was a misreading of mine. ये होता है. Why? Because you just concentrate on the language it uses, and you should understand the meaning of that word. Let me tell you, अगर word समझ में नहीं आया ना, definitely you may do some error in clicking objective. होता है, right? Let me tell you, आपकी जो 50% जो बहुत लोग 50% से wrong चला जाता है, because they don't command on language, the word. आप मतलब ही नहीं समझोगे उस वर्ड का, तो आप क्या comprehend करोगे? Isn't it? If I don't, if you don't, understand the word, you can't comprehend the meaning of that sentence, right? But those who comprehend it easily click. इतना ही अंतर है. If you command language, you can understand what question wants to ask you, right? Sometimes हम समझ नहीं पाते, and then we make a wrong tick. होता है ना? Most of the first timer के साथ यही होता है. फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइमर को बड़ा कम एक्सपीरियंस होता है, राइट? दे डोंट कंसंट्रेट, तो उनको लगता है कि सब ठीक है, मैं तो जाके तोड़ ही दूंगा इस बार तो, राइट? आई विल जस्ट डू एंड देन विल अटेम्प्ट मेंस. बट व्हाट हैपेंस? दे डू सम एरर. What error? The first error is they don't capture, they don't read question carefully. Sometimes they ignore the meaning of the word and consequently does mistake. I'm just just raising certain awareness कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो ना, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए. कोई वर्ड का मतलब नहीं है, पता है, जनरली पता होता है, राइट? बहुत समय पता नहीं होता है. जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो if you look at it is अच्छा, I was talking about a question. I'll give you one question on Article 21, right to education. Article 21A पे दूंगा, और उसमें क्या होता है, गलती होती है, और हमने गलती करने के लिए बनाया है कोई सवाल. यूपीएससी भी बनाता है वो गलती करने के लिए. ऑफ कोर्स उसको पता है कि स्टूडेंट ऐसे पढ़ेगा, ऐसे लेगा, गलती करेगा, राइट? दोज स्टूडेंट्स हु आर वेल रेड, जस्ट थोड़ा ठीक ढंग से पढ़ेगा, विल डू द रॉन्ग. पता है सक्सेस और फेलियर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा. जो मेहनत करता है, नहीं मेहनत करने वाला तो कोई बहुत फर्क है. सक्सेस मींस दैट योर नेम अपीयर इन द लिस्ट एंड योर नेम डज नॉट अपीयर इन द लिस्ट. वो होता है ना सर्टेन नंबर्स, सर एक नंबर के लिए चूक हो गया. वो क्यों चूक हो गया पता है? यू हैव डन, यू हैव रेड वेल, you have prepared well, but you have done some called human error. You have to just minimize that. Every human does error, let me tell you, but you have to minimize the human error. You are inside. Someone do ज़्यादा कर दे बाहर, होता है ना, right? Consider you are a diplomat, you are a bureaucrat. Your expectation of the state is to you do less error. अदरवाइज वो आपको भी फाइल देंगे, आप भी पढ़ के समझ जाएंगे. तो एग्जाम लेने की क्या जरूरत है सर? फिर तो वो ऐसे ही अपॉइंट कर दे हमें, है ना?
Now, in examination, the UPSC check how much human error you do. What are the aptitude you apply? What are the rationality you apply? What are the ethics you have, especially in the men's, right? वही क्वेश्चन पे there was a 6 mark ethics में. Ethics is a very called the earning subject, right? Earning paper, you can get maximum mark in the 4 GS. Four is the paper where you can earn comparatively better than the other paper. Like GS2 में तो normal course आएंगे आपके. Why is it so? Because you apply your ethics. वो बिल्कुल practical question होता है. हाँ, वो you apply your ethics, your reading, your study. You try to minimize your error. Everyone does error. Not as all solution are the right solution. राइट? जिसका कम एरर होता है उसको ज्यादा देते हैं. अदरवाइज ऐसा कोई भी नहीं है कि एक भी आंसर 100% ट्रूथ हो. ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? बट कंपैरेटिवली यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस. फाइन, चलो. अच्छा, इसने क्या किया? देयर इज अ इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A. अच्छा, आर्टिकल 21A क्या कहता है? यू हैव बेयर एक्ट. आर्टिकल 21A पढ़िए तो जरा. क्या है? नहीं है आज. क्यों? सोचा कि सर अब बोलते ही नहीं है. अच्छा, कोई बात नहीं. अच्छा, लेके आया करो. अच्छा, पढ़िए तो आर्टिकल 21A. नोट्स है ना? नोट्स में है, पढ़िए ना. स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years. राइट? कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट. अच्छा, अच्छा, इट इज अ पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी? It is a positive liberty. It is a positive right. A state is intervening for the betterment of the common good, right? Otherwise, state intervention is not allowed in your marriage. State बोले कि अच्छा, you have to just marry with this person. बोले क्यों भाई? But when state you giving you, certain things which enables you, which makes you capable, then you welcome it. Does it happen? गवर्नमेंट स्कूल तो पहले आए थे. गवर्नमेंट स्कूल पहले आए थे. फंडामेंटल राइट्स नहीं था आपके पास. You had rights. You had right to education, but it was not your fundamental right. Right? I told you that rights had been divided into two parts. One is Afar, and second is SP. So you had these rights, right? But you had no fundamental rights. Now the right to education is justiciable. The right to education is justiciable. If the school deny no admission, you can approach to the High Court or the Supreme Court directly now. Right? Earlier there was no such promotion. Okay? So there was an insertion of Article 21A, which says a state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. Okay? Now it also actually reframed Article 45. Article 45. Now, whatever the things I have read, it was there in the Article 45. Right? It was Article 45 where it says state shall strive to give free and compulsory education to all children from 6 to 14 years. ये DPSP में था. अब उसको कहां से ट्रांसफर करके DPSP से कहां लाया? यहां से यहां ले आया. Right? Now वो था कहां पर? Article 45 में था. Now Article 45 has been reframed. Now read Article 45 क्या है? Read Article 45. है आपके नोट्स में ही है, देखो ना. The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. तो क्या करता है? Early childhood care and education.
या हाँ जी, खूब रखती है। जी नहीं, जी नहीं, लेट मी, आप अभी जानते नहीं हो क्या होता है ना, एक पूरा, सोसाइटी इज नॉट सो सिंपल, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, it is a very complex. Child who are actually begging on the road, do you think that they are not deployed, they are children abandoned kind of thing? No, let me tell you that children are monitored very carefully and put some place to beg. Begging is an entire business, you know. Or yeah, it is organized crime, nahi hai, crime mat bolo, it is very much organized, right? अलग अलग के जो बेगर्स है वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, right? Now, so, but there are, we have national child policy. We have, you know, the schemes in order to care the children. We have commissions, NCPCR, yes, Ishan ne kaha. And we have, you know, NCPCR. You just call to NCPCR and the NCPCR will come and will take away that person, that child. तुम करो कॉल, वो बच्चा भी भाग जाएगा और उसके साथ जो फैमिली है वो भी भाग जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? जो बच्चा घूमते हुए देख रहे हो ना तुम, वो अपने आप नहीं घूम रहा है, उनको घुमाया जा रहा है। घुमाने वाले जो है उनको पैसा मिलता है उस बच्चों से। That children basically they are earning for their family or their master. You know, sometimes there was a, क्या लोगों को लाते थे, हाथ काट दिया, and you beg for them. इतना अवेयरनेस कहाँ है बाबू? सरकार कौन है? See, we have also responsibility, na? If you see the children, you can call to the NCPCR. NCPCR will come and take care of that children. There are already NGOs who are working for the children. Bachpan Bachao Andolan. Kailash Satyarthi ka naam suna hoga. Kailash Satyarthi, you know, received Nobel Prize for the doing work for the children. There are several organizations who are associated with NCPCR and they are getting fund from the state under the several schemes. I'm making sense to you now, right? So the children you are seeing on the road, basically they are actually monitored children. They are not abandoned children. They are not, you know, begging out of their, you can call compulsion है भाई, ऐसा नहीं कह सकते compulsion नहीं है. But आपको पता है कभी कभी beggars के पास they have more money than you have. They possess more money that you possess. Let me tell you. उसके मनी में कीड़े लग रहे होते हैं. Have you seen फुकरे? फुकरे, there's a one movie, फुकरे. वो एक बेगर्स होता, बोलते मेरे पैसे में कीड़े लग रहे हैं, कीड़े. तेरे पास क्या पैसा? वो दिखेगा ऐसे. You see during COVID demonetization, कहाँ से आए इतने इतने मतलब पैसे? Yeah, there was one beggars in Mumbai, right? कितना? Yeah. तो तुमको जो लग रहा है कि वो घूम रहा है ना, तुमको असली पता नहीं है, right? And therefore you should not give money to children or any beggars. Better not to give money. देना है, फूड ले लो, एक ब्रेड ले लो एंड दे दो. वो नहीं लेगा, ले भी लेगा, अगर भूखा है तो ले भी लेगा. सॉरी, समझा मैं? पैसे मना कर देते हैं. होता है. आप किताब लेके दे दो, बोले मैं क्या करूंगा लेके इसका. कॉपी दे दो, कॉपी पेन ले लो, नहीं ये पैसा चाहिए. See, paisa, you know, the money has made us corrupt. Let me tell you, the morally we have become corrupt because of the money. हाँ, ये होता है नहीं? क्या मैंने सुना नहीं, ईशान क्या बोला? अच्छा, see,
The corruption has different layers, and there are different dimensions of corruption, right? And the most corrupt is the ethical corruption, the moral corruption. ठीक है, आप जैसे ट्रेन में गए एंड यू डोंट हैव टिकट, यू हैव गिवन मनी टू द टीटी बाबू, कोई चीज दे दो, दैट इज आल्सो करप्शन, बट दैट इज रिक्वायर्ड, दैट काइंड ऑफ करप्शन इज रिक्वायर्ड। लेट मी टेल यू, wherever you go, आपको जरूरत पड़ेगी उसको, राइट? यू गो टू द बाबू ऑफिस, वो भी से उसका भी तो इनकम है ना, कुछ तो करेगा वो, तो ऊपर का पैसा सबको अच्छा लगता है, राइट? ऊपर का पैसा सबको अच्छा लगता है, राइट? बट इथिकल करप्शन होता है कि when you something, you know, you speak but you lie. Look at the, you know, when your rulers lie, right? This is ethical corruption. ठीक है, अपने नजरों में गिर जाना। समटाइम्स यू नो ऐसा होता है कि आपको लगे कि वो यार ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है ऐसे, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। ऐसे थोड़ा मेरा चलता है, right? But how can you sell some person for the sake of money? This is the ethical corruption, right? It's not, it does not involve only money, it involves the larger things, right? Money is there, but it involves larger things. Anyway, हाँ भाई, reframed article 45, अच्छा, it inserted one more fundamental duty. It inserted one more fundamental duty in कहां पर, chapter 4A and article 51A. 51A है ना, yes, 51A. Now you have 11 fundamental duties. Earlier there was a 10 fundamental duty, now there are 11 fundamental duties. वो तो पढ़ लो fundamental duty क्या है वो वाला, शायद उसमें है क्या? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। कहां से पढ़ लिया, मुझे नहीं मिल रहा है। Yeah, it would be, yeah, it is a fundamental duty of every citizen or the ward to provide opportunities, right, for the education from the age of 6 to 14. समझ में आया? 6 to 14, उसके बाद पढ़ना ही नहीं है। ये आर्टिकल 45 में है, सॉरी, हाँ 4A होगा, अच्छा 6A लिख दिया, oh sorry, 4A, right? So this was actually done through the 86th Constitutional Amendment Act, right? And later on, if you look at in 2019, 2009, the state has framed Right to Education Act. The state has framed Right to Education Act. हाँ जी, इसमें नहीं, वहां पर है Right to Education Act is a chapter in governance, not here. Now in Right to Education Act there are lots of law. For example, one law is, you know, no detention policy. What is no detention policy? The no detention policy is that no person can be detained, no child can be detained in the same class in the next year, whether performed or not. That is called no detention policy, right? Till the standard 8th. तो 8वीं तक देखो कोई डिटेंशन, मतलब उसको पहले होता था, earlier it was, you know, the person who fails, who does not qualify for the 3rd to 4th grade cannot be elevated. Now you cannot stop a children from 3rd to 4th. You have to upgrade every year. पढ़े ना पढ़े कोई जाओ, मजे ले लो तुम 8वीं तक।
ठीक है, there was a no detention policy. There was one law that every private school has to provide 25% seats, 25% seats to the economic weaker sections. नहीं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में या ठीक है. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो एक्ट है पर्टिकुलरली विल स्टडी इन गवर्नेंस, नॉट हियर. So this is not covered, right to education act, incomprehensively. नहीं, it is implemented. Yeah, sometimes there is a problem. ये हिंदी मीडियम को देखा movie, there are problems, and where is not problem? Tell me, which society has no problem? Which family has no problem? Tell me, any of you say, sir, I don't have any problem in my life. सबको प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ. किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास अच्छा खाना नहीं है, किसी के पास पार्टनर नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है. There are lots of issues, right? अंबानी को जाके पूछो खुश हो, बोलेगा बहुत परेशान हूं, राइट? इतना बिलियन मुझे क्रॉस करना है इतने 3 महीने में, कैसे करूं? राइट? डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ देयर इश्यूज, है ना? एनीवे, so right to education we'll discuss in the governance part, new education policy, right to education, ठीक है? Not here. But of course, right to education was at the part of Article 21, right? 21. But later on, if you look at 21A was inserted in the Constitution. It is a very separate article. Yeah. डिफरेंस क्या है? जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना था ना, उसमें एक लिखा था कि बाय अप्रैल 2010 द स्टेट शैल प्रोवाइड एजुकेशन बाय द लॉ. देखो यहां पर लिखा हुआ है बाय द लॉ स्टेट में डिटरमाइंस. रीड आर्टिकल 21A. रीड आर्टिकल 21A. 21A. A state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner state may determine. Right? Right? Now, state will determine. How state will determine? State will determine through the law. ऐसे नहीं करेगी ना. State will determine by the law. Right? So, there was a written that by April 2010, state shall pass a law in order to implement the right to education, because it was enforceable, na? Right? If in case state may not make law, one can go to the Supreme Court, because fundamental rights are justiciable, right? Enforceable. And therefore before April 2010 state framed law in 2009 itself. ठीक है, 9 में ही बना दिया. ऑफ कोर्स डेडलाइन फिक्स थी. उसके पीछे बहुत सारी कमिटी बैठी थी. वो राइट टू, जब गवर्नेंस पार्ट पढ़ाएंगे, राइट, मजूमदार कमिटी थी. देयर इज वन मोर कमिटी हु आल्सो रिकमेंडेड राइट टू एजुकेशन शैल बी प्रोवाइडेड, राइट? ठीक है. समझ में आया 2009 में क्यों लॉ बना? क्योंकि 2010 वाज अ लेट डेडलाइन. तो विदिन दैट पीरियड ऑफ टाइम, अप्रैल 2010 वाज अ डेडलाइन within which the state will make a law and implement the right to education. ठीक है. अब टाइम हो गया खत्म. ठीक है, चलो टाइम हो गया तो today tomorrow let me give you some assignment and do work. Read debates on homosexuality. Read personal data protection bill, or it has become an act now, right? Read criminalization of suicide तक हम लोग कर लेंगे, right? Capital punishment we won't do tomorrow, but ये अब जब आप पढ़ के आएंगे तो it will be helpful for you, है ना? अच्छा, डिबेट अराउंड IPC सेक्शन 377 देख लो, है लिखा हुआ. यह है होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर डिबेट. इसको रीड करके आना. यस, इसको रीड करके आना है. डिबेट्स ऑन IPC 377, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पढ़ के आइएगा.
right? Debate around the digital, क्या है, कौन सा बिल है, डाटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें एक्ट लिखा होगा, शायद वो अपडेटेड है, वही तो एक्ट बन चुका है, तो अब एक्ट पढ़ेंगे ना हम, बिल क्यों पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, या दैट इज ये तो है ना, देखो ना आरटीए से कॉन्फ्लिक्ट होता है, अच्छा बिल ही था। आता रहता है, आता रहता है। I'll talk about the act, right? It is a bill, right? Of course, in the last year, and then we'll talk about criminalization of suicide. Suicide तक आप पढ़ के आइए, and tomorrow we will discuss. ठीक है? Accordingly, you go through the bad act. Don't avoid it. It will be very helpful. Let me tell you. और एक बार ही पढ़ो, अभी जो now you read very gradually, right? But very, take the grasp on the subject matter. अच्छे से पढ़ो, ठीक है? डिस्कस इन द क्लास, कुछ लाओ ढूंढ के, सर ये समझ में नहीं आया, वी विल डिस्कस दैट। बोलो। असम, ओके, राइट, राइट, फाइन फाइन, आई नो, आई नो, यस, आई नो, सी, yes, if you look at Assam Accord was held between the Rajiv Gandhi and the Assam government. The ULFA was the part. ULFA was the part of that, right? And the purpose of the accord was to, yeah, yeah, to disallow all the person who have come through the migration, right? Especially 1971 war ke, right? Bangladesh ke war ke time pe aaya. So lots of people came, right? अब क्या हुआ? Later on there was a it's called NRC, right? NRC हुआ, अब NRC में क्या लगा? भाई हिंदू तो ज्यादा है, मुस्लिम कम है, right? अब उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, state have power to change the law, right? So state has changed it. Of course it is not according to the Assam Accord. State has power to change. State के पास कुछ भी power है, कुछ भी कर सकता है, कोई नहीं कुछ बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट? ठीक, और कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? लुक एट द एंटायर प्रोटेस्ट। आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट